good morning to all classes. Okay. So what do you mean by transient, Mr. Rahul Kumar? What do you mean by transient? What is the transient conditions of the electric circuit? Transient, sir. What is transient? What is the So transient? ट्रांजिएंट से हम लोग ये सीखते हैं कि इंडक्टर कब चार्ज हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्जिंग Not like that. राहुल कुमार थोड़ा सा स्टडी करो, ठीक है? थोड़ा सा स्टडी करो राहुल कुमार, पढ़ाई करो. मतलब देखो, you know the actually you just that today. Actually, last classes we have discussed about the transient analysis of the electric circuit. What are the transient and also the differential equations approach. So already we have discussed about the differential equations approach, the solutions of the differential equation, like a homogeneous differential equations and non-homogeneous differential equations. So last classes we have discussed, and also I have advised all of you that you just in mathematics you just try to just revise the differential equations. Okay. But now the very important thing for the electrical network, we have to solve by using the Laplace transformation. So today the class focus on the Laplace transformation. Okay. And one thing is that today I will discuss. Okay, but you just check my YouTube channel. See, just wait. Visual channel. Okay, visual Rahul. This channel is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So when you just go to the playlist, so see here network theory, third sem, also the DC network. So in network theory, when you just go to the playlist, then also all videos are available. Laplace transformation, everything is available in this YouTube channel. So also you use this, watch all the videos. Now let us start the class because some students have joined now. Okay. Okay. So right on the topic, that's a Laplace transform. Laplace transform. Laplace transform and its application. So you know, in the last classes, the previous classes, you know the classical method of solving the differential equation. Classical methods to solve the differential equations, you know, they become very and quite cumbersome. Cumbersome means a bit complex. So when used for the network, when you are used for the network, suppose involving the higher order differential equations. Higher order differential equations. So when in the network, like suppose the RLC circuit, so when there is the higher order differential equation, then it is very difficult to solve by simply the differential equations differentials approach. Because you know so many complementary and the particular integrals and constant arbitrary constants are used. So in case of the differential equation, it's very difficult. But when you use the Laplace transform to solve the higher order differential equation, then all the solutions become very easy. Okay. So the classical method, you know, that in the differential equation approach, differential equation. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग समझेंगे एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज को स्टडी करने से पहले हम लोग जो मेथड है उस मेथड से हम लोग को क्या एडवांटेजेस है, प्रीवियस मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ये सब चीज को हम लोग स्टडी करते हुए स्टार्ट करना चाहिए. इससे क्या होता है ना कि एक्चुअली माइंड में हम लोगों को समझ में आता है कि ओके हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये था और लैप्लेस में ये है. अब डायरेक्ट जब तुम लोग लैप्लेस का फॉर्मूला लिखाना शुरू कर देते हैं तो तुम लोग को ये चीज जो है कि पता नहीं चलेगा कि आखिर हम लोग लैप्लेस का यूज क्यों कर रहे हैं फॉर द नेटवर्क एनालिसिस. ठीक है. सो सी हियर लैप्लेस डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग यूज करते थे जिसको हम लोग क्लासिकल मेथड बोलते हैं,
तो बेसिकली इसमें हम लोगों को कौन कौन सा स्टेप्स करना पड़ता था? डिटर्मिनेशंस, क्या डिटर्मिनेंट करना पड़ता था? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल, determination of arbitrary constant, ये सब मेथड क्या था कि बहुत ही डिफिकल्ट था हम लोग को सॉल्व करने के लिए. So that's why Laplace transform is an integral that transfer a time domain function into a new function of a complex variable. ठीक है. So Laplace transform का जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में खासकर in your syllabus of the third semester. So engineering mathematics, you know that engineering mathematics जो है थर्ड, वो ऑलरेडी तुम लोग का जो है कि इसी सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हो. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है मैथमेटिक्स में भी है, और हम लोग जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया ही कि हाइयर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लैपलेस अप्रोच को यूज करेंगे. सो लैपलेस मेथड में हम लोग को क्या है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस यू नो, लैपलेस जो ये वर्ड है लैपलेस क्या है समझ में आता है? यू नो लैपलेस, दिस इज द नेम Yes, ऑफ sir. द मैथमेटिशियन. सो फ्रेंच मैथमेटिशियन, फुल नेम इज सिमोन लैपलेस, 1749 to 1827. ओके, तो लैपलेस उनके नाम पे ही जो है कि ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, वन ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन. सो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन is also a very powerful tools for network analysis. Any linear circuits consisting of linear circuit element can be easily solved by the knowledge of Laplace transformation. By the knowledge of Laplace transformation. So simply, we can say that this Laplace transformation is a very effective tool for solving integral differential equation. Simply क्या बोल सकते हैं कि the transformation is a very effective tool for solving integral differential equations. Screen is visible for all of you. Ayush Raj. Ayush Raj present or not? So what are the advantage of Laplace transform method? Mamta Kumari present? Yes, sir. So screen is visible, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what are the advantages of using this Laplace transform methods? What are the advantages? So, as compared to the linear simply differential approach, so advantage of this, it gives complete solution. It gives complete solution.
initial condition conditions are automatically considered also. One of the advantage is that much less time is involved in solving the differential equation. Much less time is involved in solving differential equation. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़े हो ये सब? यस सर। तो जैसे कि तुम्हारे पास इनिशियल कंडीशन दे देगा y0 x0 = y0 कुछ भी, और तुम्हारे पास एक लीनियर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स में है कि नहीं है? जिसको इंटीग्रो डिफरेंशियल सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, है मैथमेटिक्स में। तुम लोग यदि क्लास कर चुके हो तो देखना होगा। तो ठीक है, हमको इट गिव्स सिस्टमैटिक and routine solution of differential equation. Okay, so just wait 1 minute. सो ये जो है कि हम लोगों ने सिंपली समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्रोच था और जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन था वो एक्चुअली बेसिक क्या था, हम लोगों का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो बेसिक को हम लोगों ने समझ लिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिफिनेशंस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अब समझेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअली है क्या और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है क्या। सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या समझते हैं? सो बेसिक जो है डेफिनेशन, राहुल टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस। डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, बहुत ही बेसिक है एक्चुअली। टाइम डोमेन और एस डोमेन का हम लोग जो रिलेशंस का बात करते हैं, टाइम डोमेन एस डोमेन, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, जो भी मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लैप्लेस का नाम कभी सुने भी नहीं हो ना, तो डोंट वरी, जो क्लास हम ले रहे हैं बहुत ही बेसिक से लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज 2 क्लासेस हैं। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको करना चाहिए अटेंटिवली। जो भी घर में बैठे हुए क्लास कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब कॉपी उपी मतलब लिखना शुरू करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उसको लेक्चर को सुन रहे हो। सो ओके, so suppose that we have a one function with respect to time, means let f of t be a function of time and which is 0 for t less than 0 and which is arbitrarily defined for t is greater than 0 subject to some condition.
some condition. Then the Laplace transform, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं LT, बार बार Laplace transform LT of the function f of t denoted by f of s. सिंपली लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग लैपलेस ऑपरेटर L इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लैपलेस ऑपरेटर L, सी हियर L. So f of t of this time domain function, so using Laplace, simply this is f of s domain is defined as integrations of 0 to infinity or 0 minus means initial conditions, lower limit. So f of t e minus t and dt. So this is the definition, basic definition or formula of the Laplace transform. See here, this one. So see, f of t, f of s, 0 to infinity, f of t, e minus t and dt. So here, this one, the L, this is the operator, the transform ft, okay? And here, f of s, which is in the complex frequency domain, which is the complex frequency domain. Here s is basically what? S domain means here S is basically complex frequency. That is its unit is hertz. इसका unit भी क्या होता है? hertz में. And it is what? This is sigma plus j omega. So what is the sigma here? So sigma is here real part. Sigma is here what? This is the real part of S, and also known as Napier frequency. And what here? Omega, this is the imaginary part. Okay. So this is the definition of this Laplace transform. See here, 0 to infinity f of t e minus t dt. अब हम लोग कोई भी चीज का हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर साइन का निकाल सकते हैं, कुछ भी फंक्शंस के लिए उसको बताऊंगा मैं, धीरे धीरे सारा चीज पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तो 1 by 1 करके मैं सारा बेसिक बताते हुए पहुंच रहा हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशंस, लोअर लिमिट 0 माइनस या उसको 0 भी ले सकते हैं, ठीक है? सो ओके, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? ओके, सो हम लोगों ने जो देखा अभी वो था सिंपल डेफिनेशन. एक्चुअली लैपलेस में हम लोग का बहुत सारा थ्योरम है, और जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस जो हम लोग करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली थ्योरम को अप्लाई करेंगे. हम लोग यहाँ पे थ्योरम का डेरिवेशन या कुछ नहीं करना. एक्चुअली हम लोग जब भी बात करेंगे नेटवर्क में तो इंडक्टर होगा, है ना, हम लोग के पास क्या होगा, रजिस्टर होगा, हम लोग के पास क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, और वोल्टेज सोर्स में भी स्टेप इनपुट होगा, इंपल्स हो सकता है, रैंप हो सकता है, साइनसोइडल हो सकता है. तो तरह तरह के इनपुट सिग्नल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. और पैसिव एलिमेंट में आर एल एंड सी होगा. सो एल का मतलब जानते हैं, एल के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है? तो उसमें हम लोग का डिफरेंशिएशन टर्म्स आएगा. और जब हम लोग कैपेसिटर का बात करते हैं, जब कैपेसिटर के अक्रॉस में निकालते हैं 1 by c ऑफ आई डी टी, ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं करंट के फॉर्म में, ठीक है? तो वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो टर्म्स आएगा हम लोग का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस में, तो वो सारे को हम लोग डायरेक्टली बाय यूजिंग द सिंपल बेसिक थ्योरम ऑफ लैप्लेस हम लोग डायरेक्टली उसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग अप्लाई करेंगे. तो जस्ट स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम है.
और बहुत ही बेसिक थ्योरम है, और मैथमेटिक्स में भी लगभग सारी थ्योरम जो है कि है, ठीक है। सो बेसिक थ्योरम, मैंने अभी कहा कि यदि किसी ने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो भी सबको समझ में आएगा। हाँ, बेसिक थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है सब, कोई भी अननोन नहीं है, सबको पता है ये सब पहले से, मान के चल रहा हूँ। So basic theorem of Laplace transform. So number one theorem, that is the linearity theorem. Linearity theorem. Linearity. Okay. तो सपोज दैट मेरे पास क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शंस है, 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि if Laplace transform of the function f1t and f2t are f1s होगा उसका, एंड क्या होगा दूसरा का f2s होगा, टाइम डोमेन एस डोमेन, उसका लैपलेस तो ही ना होगा रिस्पेक्टिवली। देन Laplace transform of the function k1 f1t plus k2 f2t, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका लैपलेस का, ये ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। सो जैसे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जानते हैं, जैसे k1 k2 क्या है, कांस्टेंट है ना, k1 k2 क्या है, k1 k2 आर सिंपली कांस्टेंट। तो भाई जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग बाहर कर देते हैं ना, वैसे ही इसको बस बाहर कर देना है। ये k1 और f1t का क्या हो जाएगा, f1s, k2 और क्या होगा, इसको बाहर कर देंगे तो f2s। बस यही है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है ना। बस थ्योरम है, थ्योरम को समझते हैं हम लोग चल रहे हैं। k1 k2 कांस्टेंट है, k1 and k2 are constant. Next theorem, scaling theorem, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग सारा थ्योरम। स्केलिंग थ्योरम, सो व्हाट इज द स्केलिंग थ्योरम, सिंपल है इसमें भी। इफ Laplace transform of f of t is f of s, then यहां पर देखो ध्यान से, L f of at, देखो मल्टीप्लाई है, कोई स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, kt देख सकते हो यहाँ पर। इंटीग्रेशन में याद है, कोई भी चीज सिंपल मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/k जो मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा, f और s/k, k is constant, again k is constant। थर्ड नंबर, टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम, टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम। टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। यहां पर क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी का यदि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका लैप्लेस में सिंपल सा एकदम अप्रोच याद करो, एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो जो फंक्शन इनिशियल, ये सब हम लोग अभी यूज करेंगे इंडक्टर, इस सब में जो बात करेंगे ना करंट वोल्टेज के फॉर्म में, मैं भी सारा बताऊंगा। इसीलिए जितना भी थ्योरम सब हम बताते हुए जा रहे हैं, सारे थ्योरम को एकदम जो होता है एकदम बेसिक से समझते हुए चलो अभी, ठीक है, बहुत इजी है। सो ये हो गया टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम। ओके नेक्स्ट,
Fourth, frequency differentiation theorem. Frequency differentiation theorem. कुछ नहीं है इसमें भी. L, इसमें क्या है? T of ft. T of ft, यहां पर देखो T of ft है ना, माइनस डी fs बाय ds. ये चीज को याद रखना बस. T of ft is equal to minus d fs by ds. Okay. Fifth number, time integration theorem. Time integration theorem. Time integration theorem. इसमें भी कुछ नहीं है. लैपलेस ट्रांसफॉर्म है. इंटीग्रेशन 0 से t f of t dt इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, s से डिवाइड करना है. ये हो गया टाइम इंटीग्रेशन थ्योरम. अब कुछ आते हैं शिफ्टिंग थ्योरम पे. शिफ्टिंग थ्योरम में दो पार्ट होता है. एक टाइम शिफ्टिंग होता है, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है. शिफ्टिंग थ्योरम, टाइम और फ्रीक्वेंसी में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. टाइम और फ्रीक्वेंसी में. तो पहले हम लोग टाइम शिफ्टिंग थ्योरम देख लेते हैं. टाइम शिफ्टिंग थ्योरम. टाइम शिफ्टिंग थ्योरम. सो यहां पे कुछ नहीं है. टाइम शिफ्टिंग में हम लोग को देखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म f ऑफ t. यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में. सो दैट इज e प्लस माइनस a s f s. ओके. नंबर बी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम. जस्ट उल्टा करेंगे और क्या. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम. सो यहां पर जस्ट उल्टा होगा टाइम का. टाइम फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा ही तो होता है. So e of minus plus as f of t is equal to f s minus, तो ऊपर माइनस प्लस, सॉरी उल्टा होता है, सॉरी माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस. ये होगा. ठीक है. मतलब यदि e प्लस ए एस है तो f s माइनस ए होगा, और e माइनस ए एस है तो s प्लस ए होगा. Okay, so this is the shifting theorem. Now come to the two very important theorem, that is the initial value theorem and final value theorem. ये दो important theorem हम लोग अभी next पढ़ रहे हैं. Two very important theorem, that is 7, that is initial value theorem. Initial value theorem. So here, if the Laplace transform LT of f of t is f of s, and the first derivative of f of t is Laplace transformable,
then the initial value of f of t is क्या होगा? सो सिंपली इस थ्योरम को याद रखना है, f of 0 प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 f of t is equal to limit s tends to infinity s f s. So this is initial value theorem. ये क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम. ओके, सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में देख रहे हैं लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s ऑफ f s. बहुत बेसिक है और इस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में. अभी जो भी बता रहे हैं सबको थोड़ा सा समझते हुए चलना है, क्योंकि हम लोग जो अभी नेक्स्ट में जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए एनालिसिस करेंगे तो वहां पर जो है कि हम लोग ये सारी चीज यूज होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम. So if a function, see here, if a function f of t and its derivative are Laplace transformable. देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सब सारा थ्योरम और सारा फॉर्मूला को अच्छे से समझ नहीं होगा, तभी जाकर के हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारी चीज को समझ पाएंगे, है ना. तो ये सब जो है कि बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो है कि सारे थ्योरम्स को मैं पहले बता रहा हूँ. और देखना अभी जितना भी थ्योरम है सारे अभी यूज होगा. तो इफ ए फंक्शन f of t and its derivatives are Laplace transformable, then फाइनल वैल्यू हम लोग का जैसे यहाँ पर बात करेंगे वहां पर फाइनल वैल्यू का बात हो रही है, तो f of इंफिनिटी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f of t is equal to limit s tends to 0 s of fs. देखो ध्यान से, यहाँ पर s tends to इंफिनिटी है, यहाँ पर s tends to क्या है? 0 है. फाइनल वैल्यू में s tends to 0 है. ओके, सो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये सब सारे थ्योरम्स के बारे में मैंने बताया. ठीक है, सारे थ्योरम्स के बारे में जो है कि डिस्कशन हुआ है, क्या है सारा थ्योरम 1 by 1 करके समझना है. तो देख सकते हो, जस्ट वेट. So what are the importance of Laplace transformations? डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैंने सारा पहले स्टार्ट से बताया. क्या हम लोग का डिफरेंशियल अप्रोच में क्या क्या हम लोग का डिफिकल्टीज है, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या एडवांटेज है, कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. और उसके बाद जो है कि सिंपली हम लोग डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का क्या डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है उसको समझे हैं. उसके बाद बेसिक थ्योरम को 1 by 1 करके मैंने बताया, लिनियरिटी से स्केलिंग से लेके फ्रीक्वेंसी, कितने सारे थ्योरम एक्चुअली है. तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हो और यहाँ पर भी दोबारा पढ़ रहे हो. ठीक है, अभी जो हम लोग नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे वो बेसिक फंक्शन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन. तो जितने भी हम लोग फंक्शंस के बारे में है जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी होगा यूज, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, डैम्प फंक्शन, डैम्प कोसाइन फंक्शन, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शंस. तो इतने सारे फंक्शंस का एक्चुअल में हम लोग टाइम डोमेन से एस डोमेन में एनालिसिस करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन पे. ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लिया राहुल? राहुल? यस सर. ओके, अभिज्ञान, मिस्टर अभिज्ञान? यस सर. कोई डाउट यहां तक लैपलेस में? नो सर. नो सर. ओके, अविनाश दुबे? यस सर. कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है. ओके, प्रीति कुमारी कोई डाउट? प्रीति कुमारी? नो सर. रवि कुमार मुर्मू? नो सर, क्लियर है. क्लियर है, ओके, वेरी गुड. श्रेया भारती? श्रेया भारती कोई डाउट यहां तक?
श्रेया भारती, मैंने कहा था कि 3 बार मैं बोलूंगा, यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो एब्सेंट, ठीक है। और रियंका कुमारी, Yes, कुमारी, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So okay, so now the next just join again, okay? Due time limit over now. So join again, and now we will discuss the all types of function. So join again.